एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः एनसेल संस्थाया अंशभागिताया विक्रयण सम्बन्धी प्रकाशितान् समाचारान् प्रति गभीरां जिज्ञासां व्यनक्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रचण्डेन अंशभागिताया विक्रयण सम्बन्धी प्रचलितस्य वैधानिक प्रावधानस्य अंशभागिताया विक्रय वितरणयो प्रचलितयो विधि प्रक्रियश्च पालना विहिता नवेति सम्बन्धे अध्ययनाय सम्बद्ध निकाय निर्दिष्टो स्थिति प्रधानमन्त्रिणा सचिवालयो ज्ञापयति। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एनसेल संस्थाया अंशभागिताया विक्रयणेन नेपालस्य दूरसञ्चार क्षेत्रे वैदेशिक निवेशने च सम्भाव्यस्य प्रभावस्य नेपाल सर्वकारस्य राजस्व प्रवृत्ति विषयेषु आपतिष्यमाणस्य प्रभावस्य च विषयो अपि यथाशीघ्रम् अध्येतुं सम्बद्ध निकायं निर्दिशति। रूस देशीय सेनायां कार्यरता 60 नेपालिनः मृताः सन्तीति परराष्ट्र मन्त्रालयो ज्ञापयति। परराष्ट्र मन्त्रालयेन गत दिने विज्ञप्ति प्रकाश्य षण्णां नेपाली नागरिकाणां रूस देशीय सेनायां कार्यरतावस्थायां निधनस्य सूचना प्राप्तिति ज्ञापितं वर्तते। सर्वकारेण दिवंगतान् जनान् प्रति श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयित्वा शोक सन्तप्त परिवारान् प्रति समवेदना व्यक्ता अस्ति। नेपाल सर्वकारेण रूस देशीय सर्वकारः मृतकानां शवान् यथाशीघ्रं नेपालं प्रेषयितुं पीडित परिवारेभ्यः क्षतिपूर्तिं प्रदातुं च अनुरोधो वर्तते। मृतकेषु गोर्खा जनपरिषद सन्दीप थपलिया, कपिलवस्तु जनपरिषद बाणगंगा पालिकाया प्रथमवटा क्षेत्रस्य रूपक कार्की, पोखराया देवान राई, स्याङ्जा जनपरिषद पुतली बजार पालिकाया पञ्चवटा क्षेत्रस्य प्रीतम कार्की, दोलखा जनपरिषद मेलुङ पालिकाया 6वटा क्षेत्रस्य राजकुमार रोका, इलाम जनपदस्य गंगाराम मोक्तान च सन्तीति विज्ञप्तौ ज्ञापितं वर्तते। सर्वकारेण नेपाली नागरिकान् रूस देशीय सेनायां न नियुक्तुं नियुक्तेषु ससु तादृशान् नागरिकान् तत्कालं नेपालं प्रत्यावर्तयितुं च रूस सर्वकार अनुरोधोऽस्ति। सर्वकारीय कार्येषु रूस देशीय सर्वकारस्य छात्रवृत्तौ व्यवसायेषु च संलग्नान् जनान् विहाय अन्येषां नागरिकाणां कृते रूस देशस्य यात्राया आवश्यकतां सत्यं परराष्ट्र मन्त्रालयन्तर्गतेन त्रिपुरेश्वरवर्तिना कन्सुलर सेवा विभागेन प्रदातव्यं यात्रानुमति प्रमाणपत्रं गृहीत्वा एव यात्रां कर्तुं मन्त्रालयेन अनुरुद्धमस्ति। मन्त्रालयस्यानुसारेण रूस देशीय सेनायां नियुक्तिं प्राप्य सम्प्रति युक्रेन देशे बन्दिन अवस्थायां विद्यमानस्य नेपाली नागरिकस्य विवेक खत्री इत्यस्य नेपालं प्रत्यावर्तन सम्बन्धेपि कूटनीतिक प्रयास विधीयमानो वर्तते। कस्यापि प्रलोभनेन असत्य सूचना आधारेण वा युद्धग्रस्त राष्ट्राणां सेनायां नियुक्ताः न भवितुमपि परराष्ट्र मन्त्रालयेन सर्वे अनुरुद्धाश्च सन्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भाषते नेपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस्य कोऽपि विकल्पो नास्ति, लोकतन्त्र विरोधिनां स्वराणां सार्थकता च न वर्तते। सिंहप्रासादवर्तिनी प्रधानमन्त्री कार्यालय ह्य सम्पादकै सह विहितायां अन्तर्क्रियायां प्रधानमन्त्री प्रचण्डः विश्वस्मिन् विश्वेव अवलम्बिता नेपालेपि जनताया परिचिता च व्यवस्था एव लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमस्ति, अस्य अपर कश्चन विकल्पो न वर्तते इति च प्रावोचत्। धर्मस्य विषय पश्चातन समय जायमाना गतिविधयोपि सर्वकारस्य सूचनायां सन्तीति चर्चयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः विषयस्मिन्नपि संविधाने लिखितात् पृथक् किमपि न भवतीति समस्पष्टयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वस्मिन् विश्व एव अवलम्बितं लोकतान्त्रिक गणतन्त्रं वैज्ञानिकी अग्रगामिनी च शासन व्यवस्था अस्ति इत्यतः सम्प्रति अस्या विकल्पस्य अन्वेषणम् अनुचितं भवतीति अतर्कयत्। एवमेव प्रधानमन्त्री प्रचण्डः वर्तमान सर्वकारीय सम्मिलितानां राजनीतिक दलानां सत्ता गठबन्धनं विच्छिन्नं न भवतीति च स्पष्टीकृतवान्। सवृष्टि हिमपातस्य हेतु शैत्यस्य वर्धनेन पश्चिम नेपालस्य हिमालयस्य उच्चै पर्वतीयस्य च भूभागस्य जनजीवनं प्रभावितं वर्तते। ह्यः पूर्वाह्णत एव हिमपात प्रारम्भम् अनु हुम्ला जनपदे विमानोड्डयने प्रभाव सर्जनात् यात्रिणः सीमाकोट स्थाने एव अवरुद्धाः सन्ति। एवमेव बागलुङ मुस्ताङ मुगु जनपदेष्वपि हिमपातेन जनजीवनं यातायात सेवा च प्रभाविते स्तः। ऊर्जो जलस्रोत सेचन मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत कथयति औद्योगिक राष्ट्राणां कारणेन पृथ्व्याः तापक्रम वर्धमानो वर्तते। संयुक्त अरब इमिरेट्स देशस्य दुबई स्थाने सञ्चाल्यमानस्य जलवायु सम्बद्धस्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनस्य अवसरे
साथसाथै संस्थाया पूर्विद्यु नेपाल मण्डपे आयोजित कार्यक्रमे मन्त्री बस्नेत अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन नेपाल सदृशे प्राङ्गुर सर्जनी न्यून योगदानं कृतवद्भि राष्ट्रैः अधिक क्षति सह्यमाना वर्तते। मन्त्री बस्नेत अगादत नेपाल जलवायु परिवर्तनस्य न्यूनीकरणाय स्वस्य प्रतिबद्धतां पूरयितुम् अग्रेसरो वर्तते। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा निगदति पत्रकारिताया क्षेत्रे महिलानां संख्यां वर्धयितुं सर्वकारेण संचार माध्यमैश्च संवेदनशीलेर भाव्यम्। प्रेस काउन्सिल नेपालेन महिला पत्रकाराणां कृते आयोजितं प्रविधि मैत्री पत्रकारिता प्रशिक्षणं ह्य दाङ जनपरिषद भालुवाङ स्थाने उद्घाटयन्ती संचार मन्त्री शर्मा पश्चातन कतिसूचित वर्षेषु नेपालेपि समावेशीकरण वर्धमानं सदपि पत्रकारिताया क्षेत्रे महिलानां संख्या अत्यधिक न्यूनास्ति इत्यतः एतस्य वर्धनम् आवश्यकमस्ति उदयरयत्। कार्यक्रमे नेपाल पत्रकार महासंघस्य अध्यक्ष विपुल पोखरेल अगादत प्रविधिना सह सम्पृक्तायां सत्यामेव समयानुकूल पत्रकारिता अभ्यास सम्भवतीति अवोचत्। ह्य एव नेकपा माओवादी केन्द्रेण प्युठान जनपरिषद सरूमा रानी ग्रामपालिकाया द्वितीयवटा क्षेत्रे आयोजितायं सभायं मन्त्री शर्मा सर्वकारेण सुशासनं समृद्धि सामाजिक न्यायस्य मार्गदर्शनस्य रूपेण अहिमता सन्तीति अगादत। संचार मन्त्री शर्मा न्यूनता दुर्बलता दूरीकृत्य संगठन निर्माण अभियाने संलग्ना भवितुं नेतृन् कार्यकर्तृन् च अनुरुणत्। नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निगदति समृद्ध नेपालस्य दीर्घकालिक लक्ष्यस्य प्राप्तये दैलेख जनपदे विद्यमानस्य शिलातैलस्य अन्वेषणस्य विकल्पो नास्ति। एमाले दलेन सञ्चालितस्य झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धि संकल्प यात्रा अभियानस्य क्रमे कर्णाली प्रदेशस्य दैलेख जनपदं प्राप्त अध्यक्ष ओली ह्य दैलेखे विद्यमानं शिलातैल पदार्थम् उत्खनितुं बलं प्रादात्। राष्ट्रिय सभाया विधान व्यवस्थापन समितौ एतद् विक्रमवर्षीयं शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकम् आधृत्य प्रकरणगतं विमर्शनं प्रारब्धं वर्तते। समिते ह्य सिंहप्रासादे उपविष्टे उपवेशे सांसदाः सम्प्रति सञ्चाल्यमानेषु विश्वविद्यालयेषु प्रधानमन्त्रिणा कुलपतिर्भवनस्य व्यवस्थया समस्या सृज्यमाना अस्ति इत्यतः विश्वविद्यालयेऽस्मिन् कस्यचन प्राज्ञिक व्यक्तित्वस्य कुलपतिर्व्यवस्थाया सम्पादनत्वेन विधेयकं संशोधनीयमिति विचारं व्यक्तवन्तः। सांसदा विश्वविद्यालय नूतनरीत्या सञ्चालिता सन्देव स्थापनाया औचित्यं पुष्टि भवतीति हेतोः सञ्चालनस्य स्पष्ट स्वरूपं विधेयक एव समावेशनीयमिति बलं प्रादुः इति समाचारः।